Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. So, in today's video, we will understand what educational research really means, its key characteristics and the types of scientific methods that help us to discover truth in education. So, we will start with the definition of research. Research is basically a combination of re plus search. Re is again and search means to find out. Do you know every day without realizing it, you are already doing research. Research means finding correct answer. Finding correct answer to question in smart and careful way. You try different routes to school to see which is faster. That's research. So, research is basically question plus trying, koshish plus observing plus improving. ट्राई किया, ऑब्जर्व किया और इम्प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जहां इम्प्रूवमेंट है दैट्स द रिसर्च. एजुकेशनल रिसर्च जो होता है वो हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने को जो है हम एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं. टीचिंग, सॉल्विंग टीचिंग एंड लर्निंग problems. So, scientific manipulation of concepts. Research R stand for rational way of thinking. Rational way is basically the logical way. Logical way of thinking. Not emotionally. So, E is for expert and exhaustive treatment. Exhaustive is basically understanding deeply. उस चीज को बहुत अच्छे से समझना. Before buying phone, you work on reviews and compare features with your friends, and you will ask with your friends regarding which phone to buy. So, search is S is for search and solution. सर्च करना, solution find out करना. E is exactness, कितनी clarity है. A is for analysis. R is for relationship of facts. This is basically connecting ideas. Ideas को connect करना. C is for critical observation and constructive attitude. Observe करना critically. H is for honesty and hard working. So, this is all about research. The manipulation of things, concept or symbol for the purpose of generalization to extend, correct or verify knowledge. Knowledge को verify करना is the encyclopedia of social science. The foundational pillars of educational research. So, the foundational pillars of educational research are: it is purposeful and planned. ये purposeful होता है, planned होता है. This is basically proactive systematic scientific process. And second is empirical and observable. हम उसको observe कर सकते हैं. This is grounded in measurable data and actual experience. Problem solving, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशनल इश्यूज को लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए. फोर्थ वन इज रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव. ये जो है बायसनेस से फ्री होता है, लॉजिकल साउंड होता है. इट इज जेनरेटिव. It fills the gap and build new theoretical knowledge. So, educational research is not just about books and exams. It actually improves how we learn. कैसे हम जो है learn करते हैं. And behave, and it teaches how to behave in daily life. Scope of educational research. It has multidisciplinary domains. So multidisciplinary, it includes educational psychology,
educational studies and philosophies, teacher education, distance education, educational sociology. So, scope means where and how educational research is used. It is where and how educational research is used. कैसे हम इसे यूज करें, तो कौन कौन से डोमेन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंड माइंड एंड लर्निंग, ये हमें माइंड एंड लर्निंग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है. सेकेंड इज व्हाई एंड व्हाट टू टीच, व्हाई एंड व्हाट टू टीच. थर्ड वन इज टीचर एजुकेशन, basically improving teachers, fourth is distance education, learning from anywhere. Educational sociology is basically learning in society, so how family, society and culture affect education, it deals with educational sociology. Educational research improves learning by understanding the mind, values, teachers, technology, and society. So, this is all about the educational research scope. The paradigm spectrum lenses of reality. अब paradigm क्या होता है? Paradigm is basically a way of seeing. किसी चीज को अपने नजरिए से देखना. A way of seeing and understanding the world. This is the paradigm. Paradigm spectrum is basically ये होता है हमारा एक कोई फिक्स्ड रियलिटी है, फ्रॉम फिक्स्ड रियलिटी है, कोई हमने रियलिटी जो है वो फिक्स्ड कर रखी है, ठीक है. अब हम उसको देखते हैं कि मल्टीपल रियलिटीज है, realities, then change and power, then no single truth. So basically it has transition from fixed reality to multiple realities, then change and power, then no single truth. So this is the paradigm. इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म की. इट इज बेसिकली द साइंटिफिक लेंस. ये एक ओल्डेस्ट पैराडाइम है जो नेचुरल साइंसेस में रूटेड है. दिस इज बेसिकली वर्क given by Comte and Mills, focuses on quantitative methods, hypothesis testing and absolute objective measurement. This basically ये कहता है कि जो है रियलिटी जो है वो फिक्स्ड है, मेजरेबल है एंड ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि अगर टीचर ने जो है स्टूडेंट के मार्क्स चेक किया, 90 है तो उसको पता है कि शी इज अ गुड स्टूडेंट, एंड इफ 40 है इट मीन्स पुअर. सो ये जो रियलिटी है ये फिक्स्ड है, इट इज मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव, दैट टीचर चेक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट and this will create the viewpoint. Interpretivism is basically understanding people's view. It emerged via Weber and Dithey, focuses on how humans create meaning in natural environment. It is subjective, context heavy. So, for example, वन स्टूडेंट फाइंड मैथ इजी, एक को जो है मैथ इजी लग रहा है और दूसरे को जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है. सो सेम सब्जेक्ट है बट डिफरेंट एक्सपीरियंस है. सो दिस इज बेस्ड ऑन पीपल्स व्यू. थर्ड वन इज क्रिटिकल पैराडाइम. इट इज यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज, फोकसेस बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन टू एक्चुअल सोशल चेंज, पावर डायनामिक्स, जस्टिस एंड वैल्यूज. सो बेसिकली दिस क्रिटिकल पैराडाइम फोकसेस ऑन पावर एंड चेंज. ये पावर एंड चेंज पे फोकस करता है. For example,
poor student don't get equal opportunities. So research tries to improve fairness. So this is the critical paradigm. The epistemological matrices. So positivism is, it emphasizes on objectivity, knowability, deductive logic. Its core assumption is society can should be studied empirically and scientifically. Interpretism, it's based on people's view. So research on humans, people interpret their social roles in relationship, which influence how they then give meaning to those roles and the roles of others. So social constructivism is truth as varying, socially constructed, and ever changing. Its core assumption is reality is created collectively, social context and interaction frame are realities. So, reality is created by society. Reality is created by society through interaction, थ्रू इंटरैक्ट करेंगे सोसाइटी से, थ्रू इंटरैक्शन एंड कल्चर के थ्रू. सो व्हाट वी बिलीव इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी. जो हम बिलीव करते हैं वो किससे क्रिएट होगा? सोसाइटी से. दिस इज द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म critical paradigm. This is focused on power and change. Social science can never be truly value free and should be conducted with the express goal of social change in mind. Fifth one is postmodernism. It emphasizes on deconstruction, means no single truth. कोई भी single truth नहीं है. Truth in any form may or may not be knowable. So there is no fixed truth, everything is flexible. कोई भी fixed truth नहीं है और जो है वो flexible है. For example, fashion trend जो है वो change होता है. Fashion trend change. So what is good today may be outdated tomorrow. The polar extremes of social science. Burrell and Morgan 1979 scheme for analyzing assumption. So based on the subjectivist assumption and objectivist assumption. What is ontology, epistemology, human nature and methodology. So ontology based on subjectivist is nominalism. It is subjective, names and label. And realism is objective hard facts. So nominalism कहता है कि reality is just names and label we give by calling someone intelligent or weak. किसी को हम label कर देते हैं intelligent से और किसी को हम weak से label कर देते हैं. And epistemology, this basically tells about the knowledge. Reality is not fixed, we create it with words. So this is said by nominalism. And anti-positivism is basically knowledge comes from understanding feelings. So knowledge comes from understanding feelings. That is experiential. For example, instead of marks, teacher asks, why do you feel stressed during exam? So marks के नहीं पूछते हुए जो है वो टीचर पूछ रही है कि एग्जाम में स्ट्रेस क्यों हो. So this is based on understanding feelings. Human nature, voluntarism, that is free will. Free will is basically are we free or control? Human nature. ये क्वेश्चन है, are we free और कंट्रोल. सब्जेक्टिविस्ट कहता है कि फ्री विल है आपके पास, बट जो ऑब्जेक्टिविस्ट है ये कहता है कंडीशन बाय सर्कमस्टांसेस. एंड मेथोडोलॉजी इज बेसिकली स्टडी आइडियोग्राफी इज फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव. इट्स बेसिकली स्टडी इंडिविजुअल केसेस डीपली. स्टडी इंडिविजुअल
cases deeply. सब ऑब्जेक्टिविस्ट जो है, एज पर द ऑन्टोलॉजी, रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, मेजरमेंट. रियलिटी एग्जिस्ट वेदर वी बिलीव इट और नॉट. हम बिलीव करें चाहे ना करें, रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये वर्क करती है. अगर आप इस पर बिलीव करो तो ठीक है, नहीं करो तो इट्स ओके. सो बट ग्रेविटी वर्क्स इवन इफ यू डोंट बिलीव इट इन इट. सो पॉजिटिविस्ट कहता है कि साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेबल है. दिस इज द ऑब्जेक्टिविस्ट अजम्पशन दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम फैक्ट्स एंड डेटा. यहाँ जो नॉलेज है वो फैक्ट्स एंड डेटा से आ रहा है. फ्रॉम फैक्ट्स एंड डेटा. एग्जाम्पल, मार्क्स, अटेंडेंस, टेस्ट स्कोर. Determinism, conditioned by circumstances. This is basically the human behavior is controlled by external factor. Example, student perform poorly due to family pressure. So this is controlled by external factors. And as per the subjectivist, it is the free will. Nomothetic is systematic protocol, quantitative. This is basically study general pattern and rules. For example, survey of 100 students to find common study habit. 100 स्टूडेंट का सर्वे किया, क्या फाइंड करने के लिए? कॉमन स्टडी हैबिट्स क्या है उनकी. सो दिस इज नोमोथेटिक. और यहाँ पे हम क्या है, इंडिविजुअल केसेस स्टडी करते हैं. सो ऑन्टोलॉजी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविस्ट एंड ऑब्जेक्टिविस्ट हैज टू डिफरेंट पॉइंट्स. Translating philosophy into practice. So research is basically divided into two parts, that is quantitative studies and qualitative studies. Quantitative is based on positivist paradigm, qualitative is based on humanistic interpretivist paradigm. As per the quantitative, it is experiential, quasi-experimental, correlational. Qualitative, survey, case studies, documentary analysis, developmental studies, ethnographic, historical, philosophical. The iron laws of the scientific method. So, the laws of scientific method, this is basically a set of rules comprising operational definition, generally controlled observation, repeated observation, confirmation, and consistency, given by Barry F. Anderson. So, first one is replicability. The research work or study must be able to repeated by others with the same result. So, the same result again and again and again. For example, you study 2 hours, you consistently score good marks. आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो consistently, then you will get good marks. This is the replicability. The research work study ये जो है repeated by others है with same result. Then precision is basically clarity and exactness. Hard to measure theoretical concept must be defined with exactness so other research can test the theory and measure those concepts. So with clarity and exactness, for example, a person study a lot, वो बहुत पढ़ता है, ठीक है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, बट he studies 2 hours every day, 2 घंटे हर दिन पढ़ता है. सो इसमें क्या है, हमारा क्लैरिटी है, एग्जैक्टनेस है. Falsifiability. A theory must be stated in a way that it can be falsified or disproven, untestable theories or unscientific. So falsifiability is basically can be proven wrong. गलत साबित करो. This is the falsifiability.
फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग एट नाइट इज बेस्ट, लोग कहते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं, बट इफ यू ट्राई और टेस्ट एंड रियलाइज मॉर्निंग वर्क्स बेटर. सो जो लोग कहते हैं कि जो नाइट में पढ़ना जो है उससे मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, तो वो अगर मॉर्निंग भी ट्राई करके देखेंगे तो दे फील दैट दे कैन बी प्रूवन रॉन्ग. Fourth one is parsimony, that is Occam's razor. When multiple explanation exist, science always accept the most logical and simplest explanation. Multiple explanation है आपके पास, पर साइंस जो है वो किसको एक्सेप्ट करेगा? सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन को. दिस इज बेसिकली सिंपल रीजन, बहुत ज्यादा जो है हॉश पॉश नहीं, सिंपल रीजन. ठीक है. बेस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑक्कम रेजर इज बेस्ट simple explanation. Think simple before thinking complicated. पहले सिंपल सोच लो फिर कॉम्प्लिकेटेड सोचना, पर लेकिन आजकल तो सब चीज कॉम्प्लिकेशन ही हो गई है. द साइकिल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी. सो दिस इज बेसिकली द स्टेप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं, बेसिकली फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, हाइपोथेसिस, कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको टेस्ट करना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस. फिफ्थ वन इज कंक्लूजन, सबका कंक्लूजन. नाउ फर्स्ट वन इज एजुकेशनल रिसर्च स्टेप. अ थ्योरी ऑफ फिनोमेना एग्जिस्ट, फिनोमेना एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अ रिसर्च प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया हमने. बेस्ड ऑन द थ्योरी अ टेस्टेबल रिसर्च हाइपोथेसिस इज फ्रेम्ड. हमने जो है रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, ठीक है, थ्योरी के बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस फ्रेम करी. देन वेरिएबल्स जो है वो ऑपरेशनलाइज करें. ठीक है. देन रिसर्च स्टडी जो है वो कैरी आउट करी, डेटा कलेक्ट करा. ठीक है. देन रिसर्च हाइपोथेसिस जो है पुट इन द नल फॉर्म और उसको टेस्ट किया. अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो थ्योरी कंफर्म्ड है, अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अनदर हाइपोथेसिस बनाएंगे हम लोग. स्टेप 3 और 7th, ये वाला जो है 7th है. ठीक है. 3 एंड 7th जो है वो हमारा रिपीट होगा फिर से. थर्ड वन, ठीक है, एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो थ्योरी विल बी मॉडिफाइड. सो 3 approaches to investigation. This is basically the types of scientific method, types of scientific method, scientific research, or you can say. First one is exploratory. This is untangling the unknown. इसको जो है untangle करना, जो हमें नहीं पता है एक्सप्लोर करना. थर्ड वन इज एक्सप्लेनेटरी, फाइंडिंग द रूट कॉज पता करना. डिस्क्रिप्टिव, मैपिंग द करंट स्टेट को मैप करना. सो दैट इज द प्रेजेंट. एक्सप्लोरेटरी मेथड क्या होता है? मैपिंग द सेफ फ्यूचर. इट्स कोर पर्पज इज अनटैंगल अ प्रॉब्लम एंड पेव द वे फॉर अनइंटरप्टेड फ्यूचर ट्रैवल, यूज व्हेन देयर इज अ सिवियर लैक ऑफ डेटा, लिटरेचर और गाइडिंग रिसोर्सेज. हमारे पास लैक ऑफ डेटा है, ठीक है, लिटरेचर नहीं है, गाइडिंग रिसोर्सेज नहीं है. सो दिस इज टू अनटैंगल अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन हाउ एंड वाई, ये बेसिकली डील करता है हाउ एंड वाई. डेटा टाइप क्या है इसका? ऑलमोस्ट क्वालिटेटिव है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इंटरव्यूज है. दीज आर मोस्ट पॉपुलर मेथड्स. हाईली इंटरेक्टिव, फ्लेक्सिबल, ओपन एंडेड है एंड स्कैटर्ड है. इसका आउटपुट क्या आएगा? इट कैन नॉट इजीली फॉर्म कंक्लूजन. किसी एक
कंक्लूजन पे नहीं इजीली फॉर्म कर सकते हैं. फॉर्म द इनिशियल बेसिस फॉर फ्यूचर कंक्लूसिव रिसर्च. सो दिस एक्सप्लोरेटरी मेथड इज बेसिकली एक्सप्लोर समथिंग न्यू. ये कुछ नए को एक्सप्लोर करता है. एक्सप्लोर समथिंग न्यू. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एग्जाम्पल, हमारे पास न्यू सब्जेक्ट है, उसके लिए आप क्या करेंगे? यू वॉच वीडियोज, रीड बुक्स एंड यू रीड बेसिक्स. So this is the exploratory method. Second one is explanatory method, illuminating the root cause. Its core purpose is to discover the reason why something occurred. क्यों ये हुआ? Serve as a starting point for more in-depth studies and fill gaps in missing information. Provides precise insight on how and why problem. How and why को deal करेगा problem की. क्वालिटेटिव पैटर्न एनालिसिस है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर चेंजेस, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस एंड टेक्निक्स. इट्स आउटपुट इज डायरेक्टली हेल्प्स इन फॉर्मिंग firm theories or testable hypothesis. This is basically why it happened. Why it happened. ये हुआ तो क्यों हुआ? Why it happened. और why is it happening? Why is it happening? ये क्यों हो रहा है? ठीक है. एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्कोर मोर बिकॉज दे रिवाइज रेगुलरली. ठीक है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेटरी. थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव. द करंट स्टेट स्नैपशॉट. A sort of survey research done at a given time to study, report, and understand the current status of the situation or characteristic of a population. So, question is what, when, who, and where. इस डेटा टाइप इज क्वांटिटेटिव. उन दोनों में क्वालिटेटिव था, इसमें क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव है. कलेक्ट्स क्वांटिफाइबल इनटू 4 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. Variables are absolutely not influenced in any way. Hypothesis testing is optional. So hypothesis testing is optional. और जो variables है that is not influenced in any way. प्राइमरी टूल क्या होगा? ऑब्जर्वेशनल मेथड, केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डेवलपमेंटल स्टडीज. सो डिस्क्रिप्टिव इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग. एग्जाम्पल, student study 3 hours daily on average. So this is the current state of snapshot. The distinguish or the distinction between the exploratory, explanatory, descriptive. The comparative synthesis of investigatory approaches. ये हमारे कौन से टाइप्स है? साइंटिफिक मेथड के. साइंटिफिक मेथड. इसका प्राइमरी गोल क्या है? अनटैंगल एंड मैप, फाइंड रूट कॉज, डिफाइन करंट स्टेट. हाउ एंड वाई. हाउ वाई इन डेप्थ. हाउ एंड वाई इसका भी है, हाउ एंड वाई इसका भी है, पर ये डेप्थ में डील करता है. इट्स बेसिकली डील्स विद द रूट कॉज. व्हाट, व्हेन, हु, वेयर इसके की क्वेश्चन है. डेटा डोमिनेंस इसका क्वालिटेटिव है, इसका भी क्वालिटेटिव पैटर्न है, बट इसका मेजरली क्वांटिटेटिव है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन exploratory, explanatory and descriptive. Variable control, highly flexible. Analyzes impact of change, variables not influenced. ठीक है. इसमें जो है वेरिएबल फ्लेक्सिबल है, यू कैन कंट्रोल वेरिएबल. इसमें भी एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता. इनिशियल बेसिस एंड डायरेक्शन, फॉर्म्स हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज. दिस इज statistical baseline. So this is all about the टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड. हमने आज क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ रिसर्च, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, देन स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, देन वी मूव टू द स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड्स, इट्स टाइप, characteristics. Thank you so much.